full trust in Allah subhanahu wa ta'ala, hoping that Allah will give you this reward, then غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ. Forgiven for him is all of what came, all of the sins he did previously. What a blessing and favor from Allah subhanahu wa ta'ala that He forgives all of those sins just from the simple act of fasting. Just 1 month, 30 or 29 days of fasting forgives a whole 12, perhaps even more, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, of whatever was the mistakes that you have committed. Similarly, these are 3 promises from Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan. Whoever fasts and man qama Ramadan, again, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whoever stands in Ramadan with faith and wanting the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, forgiven for him is everything that he did previously. What does it mean by standing? Of course it means the prayer, the special prayer, the extra prayer that Muslims perform at night, which is called the Tarawih prayer. And this is a prayer that involves several bowings and prostrations that the Muslims perform, and it is especially in Ramadan that they get together in large numbers in groups. And this you will see across the world, that Muslims getting together and coming together and praying in this special prayer. And this is a prayer, again, this prayer, if it is performed, it is a means of forgiveness. Allah has promised it through His Messenger. And the third promise of forgiveness in this month of complete forgiveness is Man qama Laylatul Qadr. Whoever stands on Laylatul Qadr. Laylatul Qadr is one of the special and important nights that come in the last 10 nights, and it comes on one of the odd nights, either 21st, 23rd, 25th, 27th, or 29th. And it is a night of power. Allah subhanahu wa ta'ala has called it in the Quran Laylatul Qadr, a night of power and destiny or decree. And in the same surah Allah says Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. This night is better than 1,000 months, which is equivalent basically to a lifetime. Just a few hours in the night, a few hours is equivalent to many years, 83 years approximately. So any person who is very smart obviously wants a reward, some return on his investment. If you invest $10 and you get 10,000 from it, that's very excellent. Allah is offering us much more than that, a lifetime of reward. If you pray 2 rak'ah in that night, it's like you prayed a lifetime of praying those 2 rak'ah, and same thing with reading Quran and so on. So this night is a very special and blessed night for the Muslims to really have of accumulating their reward and providing the benefit for themselves in this month. जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप समात फरमा रहे थे रमज़ान मुबारक के बरक़ात और फ़यूज़ के बारे में राफ़ अलारी साहब से, ये हमारे नौजवान इसको आज के मुक़र्रर हैं, और आपने बेशुमार खूबसूरत पॉइंट्स इनसे आज इस बयान में समात फरमाए हैं, और यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होंगी, आपके मुताले से गुजरी होंगी, और यकीनी तौर पर आप बहैसियत मुसलमान इन तमाम हिदायत पर अमल भी कर रहे होंगे। ये एक याददाश्त थी, इसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट सामने आए हैं जिसको यकीनी तौर पर मैं ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम में आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि आप किस तरह अपने बच्चों को इस मुल्क में, इस माशरे में इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और रमज़ान मुबारक के फ़यूज़ और बरक़ात से किस तरह फैज़ हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने समात फरमाया कि मानत्याल की एक मुकामी मस्जिद में अरबी ज़बान और कुरान को समझने के लिए बच्चों के लिए रात भर ये इंतज़ाम किया जा रहा है कि बच्चे 10 साल से लेकर 12-15 साल तक के बच्चे अपनी रात वहाँ गुजार रहे हैं, इस मोहब्बत के साथ, इस अक़ीदत के साथ, इस खुशू के साथ कि अल्लाह ताला के एक कलाम को वो समझ सके और इस दीन हक़ पर वो अमल कर सके। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर में ऐसी तमाम मरात हमें हासिल हैं। नाज़रीन गिरामी, अभी लारी साहब ने आपको बताया है कि इस महीने में हम अपना अल्लाह ताला के किए वादों से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस महीने में हमारे ऊपर जन्नत का वादा किया है, जहन्नुम की आग से निजात का वादा किया है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करने का वादा किया है। अगर हम इस मौके पर अपने आप को अल्लाह ताला के साथ रुजू कर सकते हैं और अल्लाह ताला के साथ जोड़ सकते हैं, तो कोई वजह नहीं कि इस माह मुबारक से हम मायूस हो जाएँ। जैसे कि आपने अभी समात फरमाया, ये वो महीना है जिसमें यतीमों को, मसाकीन को, ज़रूरतमंदों को मदद की जाए, उनकी खैरगिरी की जाए। साथ ही साथ ये रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आपको याद दिला रहा है कि भूख और प्यास की शिद्दत इंसान को किस कदर कमज़ोर और निढाल कर देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस्लामी माहौल में, जैसा कि राफ़ा साहब ने बताया है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा पहुँचता है कि हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जैसा कि अभी राफ़ा कह रहे हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वो अमाल किए जाएँ जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए,
जिससे अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम और करम फरमाए। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जिन मसाजिद में रमज़ान का एहतराम किया जा रहा है, जिन घरों में, जिन महफिल में रमज़ान का एहतराम किया जा रहा है, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की बरकत उसमें शामिल है। अभी राफ़े साहब ने ये बात बताई कि कम उम्री से अगर हम अपने बच्चों को इन तालीमात पर गामज़न कर दें तो कोई वजह नहीं, कोई माशरा, कोई सोसाइटी, कोई कल्चर, कोई ज़बान उनको राय हक़ से नहीं हटा सकता। मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि इस कोशिश में आप हमारे साथ अपने बच्चों की अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे और ऐसे तमाम इदारों में राब्ता कायम रखेंगे जहाँ पर ये तमाम सहूलात हासिल हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं कुछ 2-4 सवाल करना चाहता हूँ राफ़े साहब से। राफ़े साहब, मेरा एक सवाल ये है, क्या इस रमज़ानुल मुबारक से गैर मुस्लिम भी फ़ायदा उठा सकते हैं? Yes, of course. This is a very important question, actually. And you can see that the non-Muslims, those who are wanting to practice fasting, can also benefit from fasting as well. If you look at the lifestyle of Muslims while they're fasting, in fact, it doesn't decrease their productivity, it increases their productivity. If you see the Muslims, during the month of Ramadan, they're doing so many things. They're waking up at dawn before the sun rises to have a pre-dawn meal. And then they're going to their work and they're being very productive at work. And then they come back from work and then they have the night prayer and then they have the meal together. So in fact, Ramadan is a very lively time for Muslims, despite the fact that they're eating much less. So from this simple example, you can see that anybody who wishes to have this type of productivity, where they're actually increasing in their productivity, can try out fasting and see how it works for them. The fasting itself, as it is prescribed in Islam, is prescribed from sunrise to sunset. And this fasting is not only a means of health benefits, although there are numerous health benefits, it is of course a form of worship. It's part of it's part of the religion of Islam, it's part of ibadah, worship, to fast from sunrise to sunset. However, a different fast may be implemented for anyone who wishes to implement it, and it is proven through medical studies that this type of fasting, especially the one from sunrise to sunset, is one that cleanses the body. It increases the production of certain chemicals in the body that allow the fat to be broken down more easily. And this is an excellent form of, you can say, losing weight for whoever wishes to. Ironically, however, some people tend to gain weight in Ramadan because of the aspect of overeating in Ramadan. So the entire concept of fasting itself is that it balances, it regulates your eating habits. Mr. Larry, what is your message to the viewers about the fastings in the month of Ramadan? This final message I would give to the viewers is that for fasting people, don't be shy again of fasting, and it is something that holds much benefit in it, and it is of course one of the fundamental pillars of Islam. So for those who wish to fast, who are Muslims and non-Muslims, feel free, because this is an excellent occasion for you to do so. Especially in the month of Ramadan, you can join in with those fasting people to again show solidarity for them, and also to take advantage of your time in this month, that every second is indeed precious, and the nights are even more precious, and especially the last 10 nights. So don't spend the nights watching things that are not relevant, or that are sometimes you can do better things. Try to take advantage in this month of every single second that you can. Jazakallah khair. Thank you, Mr. Rafi, for coming and joining us in this such a beautiful program, Blessings of Ramadan, to Umeed Television Studio. And नाज़रीन गिरामी, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम को आप बहुत दिलचस्पी से समाअत फरमा रहे हैं और इसका आप हमारे साथ इस वक्त हैं। ये प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पर आप हज़रात के ख़वातीन और हज़रात के लिए पेश किया है ताकि आप मानटियाल के नौजवानों से रमज़ानुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात के बारे में उनके ख़यालात, उनके तजर्बात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन गिरामी, रफ़त नूर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें जारी रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया।